because she's here since last 1 hour, and like I was like, oh God, what to do? I made her wait so much. But thank you, Sammy, for your patience. And I especially want to say thanks to Mr. Harsh Gupta that he thought of that I can join them in DSPEA. Since last 3 years, I've been a part of it, and it's really a beautiful journey. Whatever we try, जैसा अच्छा होता है हम छोटा मोटा जैसे भी जुगाड़ करके काम कर लेते हैं, अपना शो बना लेते हैं. मुझे लगता है कि दादा साहब को ये हमारी एक तरह से स्नेह है, श्रद्धांजलि है, प्यार है, उनका बर्थडे मनाते हैं. ये जस्ट क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और मुझे लगता है कि एक जो दुनिया उन्होंने शुरू की थी उस दुनिया का हम हिस्सा हैं, और शायद हमारी जो रोजी रोटी है उसी एक हिस्से से चलती है. सो मेरा बहुत बहुत प्यार है इस संस्था के साथ, एंड मुझे लगता है कि मैं हमेशा जुड़ के रहना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Poonam. Thank you so much. And now we would like to go to Pooja Shriji. आप अगर कुछ दो शब्द कहेंगे तो thank you so much. नमस्ते, गुड इवनिंग. ये हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत हर्ष की बात है. वैसे मेरा विषय इतना नहीं है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन कहते हैं लेखकों के लिए हर विषय उनके लिए हमेशा नया और ताज़ा होता है. और मैं समझती हूँ कि दादा साहब फाल्के हमारे प्रथमेश हैं, फिल्म लाइन के प्रथमेश. जैसे हमारे धर्म में गणपति प्रथमेश है, इसी तरह से दादा साहब फाल्के जो है फिल्म लाइन के प्रथमेश है, और उनकी पूजा करना यानी उनको भावांजलि देना हमारे लिए बहुत ही, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये विचार सभी बच्चों का. तो मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा करना चाहिए. जिन्होंने निस्वार्थ निष्कपट जिन्होंने इस लाइन को शुरू किया, इतना संघर्ष किया, चलचित्र की दुनिया लाए, ये चमकता हुआ संसार जिन्होंने दिया, जिनकी झिलमिलाहट से आज पूरी फिल्मी दुनिया पूरे विश्व में अपना आकाश फैलाए हुए हैं, ऐसे महापुरुष को मैं बहुत ही प्रणाम करती हूँ, और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you. And now, ladies and gentlemen, I'm going to request our gorgeous actress here, Sayami, to say a few words. Good evening, everyone. So I was just talking with Sir here. It's an honor for me to be even associated with the Dada Saheb Phalke Awards, because I am from Nasik, and I don't know if too many people here know that Dada Saheb Phalke was originally from Nasik. So it's a matter of great prestige for me, because it's representing my hometown. Like we all know, he is the father of Indian cinema. So it's a very proud moment. Thank you so much for having me here. Thank you so much, sir. I'm looking forward to the evening. Thank you so much. Yes, sir. We'd love to hear something from you. First of all, I will like to thank Harsh Gupta and Poonam and all the colleagues for this calling me, and and my family also, and giving some time on the stage. Today is a 21st is a day when Raja Harishchandra premiere took place. 21 तारीख को राजा हरिश्चंद्र के प्रीमियर होगा ओलंपिया थिएटर मुंबई में. तो मेरे ख्याल से हर्ष गुप्ता ने ये देख लिया और 21st को एक फंक्शन रख दिया. एंड वन मोर हॉलमार्क ऑफ दिस ईयर 2017 इज दैट 1917 में इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑफ इंडिया लंका दहन बाय दादा साहब फाल्के, उसका 100 इयर्स अभी हो गया है 2017. Lanka Dahan is the first blockbuster film of India, because at that time the collection in Nas Theatre in Mumbai was over 30,000 in 1 week. In Chennai, the coins were so much because that day notes were not there, and Dada Saheb has to force to use the bullock carts, 3 to 4 bullock carts from Chennai to Nasik. So it was एकदम hit picture था, and अपना history में it is the first hit of the, and that commercial hit we can note that is that because this is 2017 is very important, and that is also double roll का भी 100 years है. In Lanka Dahan, it was produced with very limited finance,
and resourceless. Because that time was war time and Dada Saheb was struggling. To save the expenses, Dada Saheb gave the one Rama and Sita role to one male artist Salunke. उसको ही रोल दे दिया. और दिस इज द फर्स्ट डबल रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. उसका भी अब 100 साल हो गए. These are two landmarks we have to remember, and I wished all the best. And one more thing I want to announce, that on sorry, like I will just on 21st I am going to start a first website in the world on Dada Saheb Phalke, and it will be launched in evening, and I will be giving a YouTube this thing, because I had talked on Dada Saheb Phalke in English for 20 minutes, highlights, and then I will be taking poll on FB page whether he deserves the Bharat Ratna. I request, I will be sending, and you share maximum, he should get Bharat Ratna next year. That's what I think. Thank you very much, and thanks a lot. Next year onwards. Thanks very much. Poonam also suggested that. नारी शक्ति का तो सम्मान हर जगह होता है. अभी सरस्वती बाई के नाम का भी सम्मान होना चाहिए, तो लोग समझ सकेंगे कि उसका कितना सॅक्रिफाइस आहे. दो शी वॉज नॉट. फाळके हे महाराष्ट्राला नव्हे तर संपूर्ण जगाला परिचित आहेत. राजा हरिश्चंद्र हा जो पहिला मुक चित्रपट झाला, त्याने भारतीय चित्रपटाची मुहूर्तमेढ रोवली, आणि त्यानंतर प्रवास सुरू झाला. तो आज आपण जसा एखादा कल्पवृक्ष फोपावतो, तशा प्रकारे चित्रपट सृष्टी ही इंडस्ट्री झाली. सर्व तंत्रज्ञ, सर्व लोक हे जर बघितलं तर हा आवाका हा जगभर पसरलेला आहे. आणि मराठी चित्रपटाला, हिंदी चित्रपटाला जे आज जगाच्या इतिहासामध्ये जे स्थान आहे, ते महत्वपूर्ण असं स्थान आहे. हे सारी कृपा आहे ती दादासाहेब फाळकेंनी जे कष्ट केले, चित्रपटासाठी जे आपलं आयुष्य वेचलं त्याला आहे. राजा हरिश्चंद्रची फॅक्टरी हा जो हरिश्चंद्राची फॅक्टरी हा जर चित्रपट पाहिलात तर आपल्या लक्षात येईल की कशा प्रकारचे त्यांनी कष्ट प्राथमिक अवस्थेत केले. आणि आज आपण पाहतो आहोत की जगाच्या नकाशामध्ये आपली हिंदी चित्रपट सृष्टी आणि मराठी चित्रपट सृष्टी पोहोचली आहे. दादासाहेब फाळकेंच्या स्मरणार्थ आता 30 ऑक्टोबरला आम्ही जयंती साजरी करतो आहोत, आपल्या 30 एप्रिल. तर आपल्या दृष्टीनं ही आनंदाची आणि अत्यंत सुखावं अशी गोष्ट आहे, प्रसन्न करणारी गोष्ट आहे. मी सर्वांच्या वतीनं मी आपले आभार मानतो की आपण मला बोलायला दिलं, आपण मला बोलवलं. मी आपल्या सर्वांचा पुन्हा एकदा आभार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, और इस बार जैसे कि बहुत ही खास साल है, बहुत कुछ नई चीजें दादा साहब को लेकर हो रही हैं, तो we are coming up with something new this event. Let me tell you that this is happening on 21st of April, St. 21st को हमारे एक अवार्ड होने जा रहे हैं सेंट एंड्रूज में. So I am declaring hereby who all are coming the celebrities on Dada Saheb Phalke Excellence Award 2017. One is Jubin Nautiyal for the best excellence award for the best singer for film Kabil. Payal Dev for the best singer female Kabil. Falguni Phatak for Dandiya Queen. Rohit Roy for negative role for film Kabil. Usha Nadkarni for the best supporting role in Rustam. Anup Jalota ji for the outstanding contribution for the film and classical devotional singing. And our VIP comedian for the voice of stars. Raju Srivastava for the best actor. Javed Akhtar Saab for the outstanding contribution for the writing for the film industry. Kirti Kulhari for the Pink. Piyush Mishra ji for the outstanding performance for the Happy Bhag Jayegi. Rana Dagubatti for the memorable and outstanding performance for Gaji Attack. Ye Rishta Kya Kehlata Hai is the longest serial in the film industry for the television. They have passed already 2,300 serials. So the director will be getting the award for this, and the whole team of the Rishta Kya Kehlata Hai is going to come on a stage. Shuchit Sarkar for the film Pink. Mr. Pankaj Kapoor for the Shades of Pankaj. He's very much versatile actor. Urvashi Rotela for the best performance for the year for film Kabil. Hema Malini ji for Kala Shri Award